Manish, let's start with the introduction. Yes, sure. My name is Manish and I am a 25-year-old. In my career, I have a total 2.10-year experience. 6-month experience at ASAP Limited as a web designer, including like HTML, CSS, JavaScript, React also. And after that, I joining the team computer around a 2.4 year. Is as a software developer. In my career, I working on a lot of projects HMS project, e-commerce project, ticket management project, and I have a good knowledge in like Node.js, Express.js, MongoDB, MySQL, JavaScript as well. Okay. Manish, can you tell me what exactly is Node.js? Node.js basically it's a runtime environment, a runtime environment like using to be like Chrome, React engine, JavaScript engine used to be executing the code. Like mainly the JavaScript जो होता है वो client side language होती है और Node.js जो है ना provide करता है, is giving to power writing the code outside the browser, basically server side rendering, you creating the APIs, all this stuff. And JavaScript only working on the front end side, client side, basically used to be web applications, all those. एंड Node.js उसी की वो उसके उसके कोड को एक्जीक्यूट करके सर्वर साइड रेंडरिंग की पावर देता है. Okay. Yeah. Manish, can you explain me what is a middleware? Middleware basically he's a bridge. Basically, he has the power to be access request object and response object and giving to the giving to next function basically. And it's mainly used for authentication and protecting route, also used for data passing using a multer, and also be using error handling, creating the middleware. Okay. Yeah. Okay. Can you explain me what is coarse middleware? Middleware. Coarse middleware. Basically it's used to be connecting to be front end to back end. ये हमें जो power देता है front end back end को front end से connect करता है, कि back end server can be connected easily to using to be coarse middleware to be front end basically. Okay. And what about helmet middleware? Helmet. I'm pretty confused. Helmet using to be creating the log basically, if I'm not wrong. Okay. Have you ever worked on Redis? Sorry? Have you ever worked on Redis? Not yet, but I know about the Redis using to be cache, but not yet using it. Sorry for that. Okay. And what about socket.io? Yeah, I using to my personal project basically, not my career experience, but I using in my personal experience, working on my personal project. Basically, I creating this chatting application using to this socket. Okay. Yeah. So can you explain me what is socket.io? Socket.io basically here's a JavaScript library basically used to be connecting to be real-time communication. Basically इसका यूज होता है ये जो फॉलो करता है वो बाय डिस्ट्रक्चरिंग कम्युनिकेशन को यूज करता है, बाय डिस्ट्रक्शन दैट आई फॉरगेट दिस नेम, जो फॉलो करता है बाय डायरेक्शन, सॉरी फॉर दैट, बाय डायरेक्शन जो है वो कम्युनिकेशन को फॉलो करता है रियल टाइम कम्युनिकेशन करने के लिए बेसिकली. एंड ये बेसिकली पुलिंग मेथड से बेटर होता है क्योंकि पुलिंग मेथड हर एक टाइम पे एपीआई कॉल कराता है सर्वर में बैकएंड की साइड में, कि हर एक मिनट में वो एपीआई कॉल कराता है पुलिंग मेथड से. बाय यूजिंग फॉर बाय डायरेक्शन से हम क्या करते हैं कि एक बाइट तक एचटीटीपी कनेक्ट करने के बाद वो उस तक कनेक्ट रहता है जब तक वो कम्युनिकेशन रियल टाइम तक होती रहती है. दैट्स व्हाई रीजन सॉकेट आई. Okay. Yeah. Have you ever worked on MongoDB? Yeah, MongoDB. Yeah. Okay. Can you tell me why MongoDB is preferred with Node.js? Prefer I both using the both, mostly cases I using the MySQL, but
preference, like he using to be like NoSQL database, like formatting, like JSON data format, like it look like a JSON format basically, like उसमें data जो storing जो वो होती है, storing करने का जो structure होता है वो as compared to MySQL better होता है, क्योंकि वो एक array and value के बीच में data store करता है, just like कि JSON, not a JSON, वो data का जो format होता है वो mapping के लिए easy होती है. Okay. Yeah. To add something in MongoDB using Mongoose, we have a save function and a create function. Can you differentiate between these two? Differentiation with save and create. Yeah. Like mainly difference is like save जो है वो एक टाइम पे एक ही डेटा को सेव करता है अराउंड, बट इन क्रिएट फंक्शन लाइक हम मल्टीपल कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं काइंड ऑफ. दैट्स द मेन डिफरेंस आई नो अबाउट. लाइक मुझे एक ही आइडिया है, जस्ट लाइक क्रिएट के मेथड के अंदर सिर्फ हम डेटा को एक टाइम पे सेव कर सकते हैं, बट इन द क्रिएट मेथड हम मल्टीपल डेटा को कलेक्शन जो भी इंसर्ट करना है वो कर सकते हैं. That's the main difference. Okay. Why we use lean function in MongoDB? Which, what do you say Lean. like? Lean function. Sorry for that. I have no idea for that. Okay. Sorry. Okay. What do you know about aggregation? Aggregation बेसिक एग्रीगेशन क्या होता है कि हमें मल्टीपल क्वेरी को एक क्वेरी में लिखने की पावर देता है, काइंड ऑफ लाइक वी हैव वांट टू बी राइट एंड मल्टीपल क्वेरी इन द सिंगल डेटा, लाइक वांट टू बी इन द सिंगल वेरिएबल. So that case we are using to aggregation, like we want to be like lookup, we want to be use the lookup to joining the table, and also want to be like a match query, we finding the some match data and also we added some data. So which that case we are using to aggregation, like इसका जो मेनली काम होता है वो मल्टीपल क्वेरी को होल्ड करके सिंगल डेटा में रिजल्ट देना होता है. Okay. Yeah. What do you know about indexing in MongoDB? Yeah, indexing basically किसी भी डेटा को लाइक ऑफ मैपिंग करने के लिए यूज किया जाता है. लाइक वी हैव टू कलेक्शन, वन कनेक्शन है, तो जो इंडेक्स सिंपल जो कैरी होती है वो डेटा जो फाइंड आउट करता है, लाइक हमें डेटा फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन द नेम, तो वो क्या करता है कि फर्स्टली वो सारे डेटा को स्कैन करता है, लाइक स्कैनिंग कलेक्शन कहता है चीज, और जिसमें ना सिंगल में स्कैनिंग कलेक्शन में सारे डेटा को स्कैन करेगा, चाहे उसको डेटा मिले या ना मिले, तो फर्स्टली वो सारे डेटा को स्कैन करेगा. इन द इंडेक्सिंग डेटा को लाइक इंडेक्सिंग कर देते हैं कि मैप कर देते हैं डेटा, तो इससे फाइंडिंग की जो क्वेरी होती है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है काइंड ऑफ, कि वो डेटा को पर्टिकुलर को फाइंडिंग डेटा जो फाइंड करना वो इजी भी हो जाता है. Okay. Can you differentiate between callback function and promises? Callback and promises. Yes, sure. Like promise basically used to be handling the C+ programming, like following the IO model, and like promise जो हमें वो two phases देता है basically, like resolve and reject. Basically like resolve उस केस में फॉल होता है, like अब जब promise की डेटा जो है वो एग्जीक्यूट होता है प्रॉपर्ली, उस केस में हमारा जो resolve ब्लॉक फॉल होता है, तो बेसिकली then ब्लॉक, एंड कैच ब्लॉक बेसिकली जब कॉल होता है लाइक ऑफ कि जब हमारा डेटा किसी कारण से एरर गेटिंग सम एरर लाइक तो रिजेक्ट ब्लॉक में जाता है लाइक. एंड कॉल बैक बेसिकली है द आर्गुमेंट ऑफ अनदर फंक्शन, लाइक बेसिकली वो फंक्शन होता है लाइक ऑफ कि जो आर्गुमेंट होता है अनदर फंक्शन के लिए वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है जो मेन अपर फंक्शन पे होता है. Async await work synchronously or asynchronously? Async and wait. Async and await. Okay. I think so. Like जो await होता है async होता है तो वो है synchronous काम करता है काइंड ऑफ, लेकिन जो उसके अंदर की वैल्यू होती है वो asynchronous काम करती है काइंड ऑफ, क्योंकि await उस वैल्यू को होल्ड करता है. तो मेनली है जो async वो है वो synchronous वे में काम करता है. आपने माइक्रो सर्विस पे वर्क किया? Still not yet. Like मेरे को आइडिया है कि how they work, but still not yet. Okay, give me a basic idea what is microservices.
माइक्रो सर्विस बेसिकली एक लाइक किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को एक छोटे प्रोजेक्ट लाइक छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको डिप्लॉयमेंट होती है, लाइक कि हर एक इंडिविजुअली अपना अंदर कनेक्टेड होता है। लाइक सपोज मैं आपको आइडिया दूं, लाइक लाइक इंडिविजुअली काम करते हैं। लाइक वो बेसिकली क्या होता है ना, माइक्रो सर्विस जो आर्किटेक्चर होता है वो बेसिकली स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में प्रोजेक्ट को तोड़ के यूज किया जाता है। लाइक कि हर एक जो कंपोनेंट होता है वो इंडिविजुअली काम करता है, काइंड ऑफ लाइक कि वो उसका अलग सर्विस चल रही होती है। लाइक सपोज वी हैव ए प्रोजेक्ट एंड उसके ना हमने स्मॉल पार्ट दे दिया और हर एक पार्ट में इंडिविजुअली काम कर रहा है। सपोज कि लाइक हमारा कोई एक सर्वर बंद हुआ तो वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, बाकी सर्वर कंटिन्यू रनिंग रहेंगे। इस केस के लिए माइक्रो सर्विस होता है। बेसिकली माइक्रो सर्विस का स्ट्रक्चर है, इस बेस पे काम करता है। Okay. या What is MVC architecture? MVC आर्किटेक्चर बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर। लाइक इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो MVC तो मेन होता है, लाइक मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, आर्किटेक्चर होता है, जो पैटर्न होता है। सॉरी फॉर दैट, वो रिमाइंड नहीं आ रहा, मतलब वर्डिंग नहीं आ रही, सॉरी फॉर दैट। मतलब आइडिया है, मैंने बेसिकली मोस्टली प्रोजेक्ट जो है MVC फॉर्मेट में ही काम किए, बट स्टिल नॉट गेटिंग हाउ टू एक्सप्लेन लाइक। Okay. Sorry for that. What do you understand by code reusability and how do you apply it in your application to make it optimized? Sorry, can you repeat? What do you understand by code reusability and how do you apply it in your application to make it optimized? Okay, first tell me, what do you understand by code reusability? Usability, like I'm not getting yet. Like, what do you want to be asked? Like, readability, like which type? Okay, so how much experience you have? In Node.js? Yeah. 2.4 basically. Okay, so did you understood the term that I asked you? Can you repeat the term that I asked you? Time you ask. Sorry, your voice is not clear. Like, just a second. I'm saying, what do you understand by code reusability? Reusability, like you want to be say like component reusable, or something like another things, like we are creating the one function and using the globally, like It refers both. like reusability, like I think you want to be asking me like creating the one function, like one function in the globally. Just explain me that only. Okay, just go for the functions only. How do you reuse your functions? Like we are creating the function with the globally format and like exporting the like creating the like function and exporting the globally and executing the using to import and reusable, like. Okay. Yeah. Have you ever worked on Kafka or RabbitMQ? Kafka? Yeah. No, sorry. No. What about RabbitMQ? No, same. Both are not in. And what about Docker and Kubernetes? Docker also not yet. Okay. Yeah, sorry for that. Okay, if I ask you to create an application from scratch and I want it to be a secure application, so what will be your approach to make your application secure from the backend side approach? Yeah, so like we are creating the all the route setup, like पहले तो सर्वर सेटअप होगा, env फाइल सेटअप होगी राउट की, जिसके अंदर हमारा डेटा का जो भी हमारी env फाइल के अंदर जो डेटाबेस का वो URL होगा, all of things like their secret key, all of things, and we are creating the app.js जहाँ पे सर्वर कॉल, like सर्वर कॉल होंगे, like we are creating the routing, and also we create like a protected routing for the like using to JWT for the security purpose, like JWT use करेंगे as a middleware for the like security and create yeah, that this type of like follow this routine. Okay. Yeah. And so by just using JSON web tokens, your application will be secure, right?
Yeah, JWT basically used to be like create for protected route. So no anybody like go through directly without it. So जिसके पास टोकन नहीं है वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाएगा किसी भी एपीआई के अंदर मेरे को. Okay. Yeah. Okay, Manish, do one thing. Share your screen and open any JS compiler. Yeah. Okay, Manish, it's done from my side. I'll share the report with HR and she will update you. Okay, sure, sir. Thank you for your time, sir. Thank you.